Alright, so सबसे पहले यहाँ पे अगर DDL आता है, ठीक है, इसमें you have to create a database. अच्छा, इसमें databases are already created for you. यहाँ पे databases भी और कुछ tables भी हैं. So I'll directly run some parts of it जो कि are relevant to us. So you will write create database. आगे यहाँ पे आपका database का name आएगा and then you'll put a semicolon. ठीक है, semicolon in database means कि ये अब आपकी line यहाँ पे इसके बाद से press हो जाएगा. Like this is the line this is the finish of line. Then we have the DDL segment to create a table. So इसमें data types होती हैं आपके पास that you need to remember. So you will not be using the string word here. Instead you will be using varchar. Varchar अगर आप खाली लिखो that is variable character. और अगर उसके साथ आप आगे कोई number लिखते हो brackets में, then that is the number of maximum characters that you are confining it to. Then boolean, integer, real, data में बाकी सब same है. So string is not applicable anymore. Then the next thing we have is the create table. So table create करने के लिए this is a general format. So what you have to do is you have to write create table, then you have the name, then you have the attributes, then the data types, so separated by commas, और फिर आपकी primary key आएगी और उसके आगे not null आपने लिखना है, again it will end with a semicolon. Okay, so अब जैसे यहाँ पे मैं आपको example दी हुई है कि this is a table और इसको आपने create करना है. So how will you do it? You will write create table. Then the name of the table is always given, that is the employee data. So you will write employee data as it is. In fact, there is one mistake here. It should be employee data in uppercase. Okay. Then all of the data is going to be indented. Agar aap na bhi indent karo, so it's fine. SQL it's not that big of a deal. Okay. Then employee ID, first name, last name, date of birth, gender, department number. So employee ID की data type क्या होगी? अब आपके वहाँ पे variables भी हैं, sorry, characters भी हैं और numbers भी हैं. So it should be varchar. And then if you look at this, तो यहाँ पे इन्होंने limit किया हुआ to 7 characters. They're all in uniform, so you can put 7 in the brackets. Then first name, again varchar. First name has variable characters, so इसको आपने कोई size assign नहीं करना. Last name भी varchar है. Date of birth is a date. ठीक है, so यहाँ पे date आ जाएगा. Then you have the gender, which is again a varchar. Okay, अब यहाँ पे limit करने की आपको कोई like there's no added advantage. You can limit it if you want because you know female has a maximum of 6 characters, and we're assuming that the user will not input any other thing, so that is fine. And if you don't want to limit it, that's also fine. Department number, again you can see a pattern, and then finally you have to declare a primary key as well. वो आपको पता ही होती है usually, which is employee ID. So you will write primary key employee ID and not null, which means you cannot leave it empty. Okay, so this is already DDL वाला part. Okay, ये भी possible question है. So complete the rental definition for this table. So यहाँ पे आपके पास table का नाम है rental. So you will write create table rental. Rental integer not null, customer integer not null, house ID blank 5. अब आप house ID देखो तो देखो इसमें 5 characters की limit है, and you can clearly see this is a varchar. Monthly cost is going to be a real or a currency because it's a decimal value. And then deposit paid is boolean, which is not null, and then blank rental ID. यहाँ पे बता सकते हैं what will be this in the blank. यहाँ पे primary key missing थी, so this would be the primary key. Then next thing we have write a SQL for the student test. Okay, अब आप देखो student ID है, test ID है और marks है. They have not given you much, so we'll make use of what we have. Student test is the name of the table, so we write create table student test. Again, case sensitivity dash हर चीज होनी चाहिए. Student ID is an integer, so we write that. Test ID is a varchar, so we write that. And mark is an integer, so we write that. ये primary key और foreign key question complete नहीं है, इस वजह से we can skip this. But उसमें आपको बताया होता है foreign key क्या होगी, primary key क्या होगी, so you will use that. Then if you want to alter the table, okay, so let's say you have made a table. आपके पास यहाँ पे maybe products के एक table like this, and you want to alter the table. Now maybe you forgot to add one column. Maybe there is a new column now which is supplier ID, category ID, maybe product expiry. Okay, so you forgot to do that before. So if you want to do that now, उसके लिए फिर आप alter table use करोगे. So alter table में पहले आपने alter यहाँ पे table का नाम आएगा और उसके बाद आपने add, फिर आगे field name और उसकी date आएगी. So now the question says the table student needs an additional field to store the student's telephone number. For example, this. Write a DDL to add the new field to the table. So पहले आपने table का नाम लिखना है alter table, and then you will write add. अब add में इसने आपको क्या कहा कि the field name should be okay, it's just a telephone number, so you can make your own field name telnum, and the example is 0123456, so it should be a varchar, and it would not be a good idea to limit it because we have no idea कि phone numbers
let's say multiple countries के तो they will all be different in length, right? And then they're saying कि अब आपने insert new attribute into the table, add in the revised table, so you do the same thing. ठीक है, so this is just the main idea. इसमें अब आपके पास जो keywords थे main वो क्या थे? If we quickly write them, so we have the create table. First we have the create name of the database. Then we have the create, यहाँ पे आपका name of the table था, and then इसमें brackets थे और इसमें बाकी definitions थी, and then you had the alter table, और alter table के साथ आपने यहाँ पे add लिख के जो भी column था और उसकी type थी, तो आपने साथ mention किस तरह से. So you need to kind of remember the syntax because you will be penalized on that otherwise. Okay, moving on. Then we have DML. Okay, DML is a bit different. DML में ये होता है कि अब आपने existing values में what you want to do and how you can deal with them. Okay, so let's say you have this table, और इस table में अब आपने एक new row आपने add करनी है. So now this would be part of the DML. So DML में data manipulation होती है. इसके लिए you will use the keywords insert into. यहाँ पे table name आएगा, फिर values, और यहाँ पे आप सारे columns की values बताओगे. So here you have two columns, room number and room type. So you will write insert into whatever the name of the table is, values, or यहाँ पे you'll put in the value, let's say 5, and let's say luxury. So it will become part of the table. So room 5 is a double room. Complete the DML statement to add the details for room number 5 or to the table room. So insert into the table room. Values would be 5 in the room number, and then room type है double, so it goes comma double. ठीक, so I'm going a bit quickly because I'm assuming थोड़ा बहुत आप लोगों को ये याद है या recap हो रहा है, so it should be fine. Okay, then the next thing we have is insert into. ये मैंने आप लोगों को बता दिया already. और अच्छा, insert into की भी अब दो types होती हैं. So insert into, if let's say you don't want to insert all the values in the column. Let's say you want to insert into all the values in the column, so आप insert into यहाँ पे directly table name लिखते हैं. Okay, so if you're adding all the values for the column, but let's say you want to skip some. Let's say यहाँ पे आपके पास अगर room number available नहीं है, you just have the room type available. So what you can do is you can actually specify which fields you want to insert the values into. So it would look something like this. Insert into, और यहाँ पे टेबल का नेम आ जाएगा, and then you'll write in the values. अच्छा, अब टेबल के नेम के साथ let's say table name is rooms. So यहाँ पे अब आपको कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, जैसे सर room name, room. Let's say you don't want to add values into the other columns, so you just leave it here, and यहाँ value add कर दोगे maybe page. इस तरह करके. Okay, so this will go into that one specific column. Then if you want to update the data और record in a table, so अब update का क्या मतलब है कि आप existing value को modify कर रहे हो. Let's say यहाँ पे आपके पास है tofu है, so you want to update this tofu to maybe rice. And okay, so if you want to do that, for this we use the syntax update table name set, where यहाँ पे आपने condition बतानी होगी कि where आपके column की value जो match कर रही है, और यहाँ पे आपकी condition आएगी. So Fatma, who is an area B nurse with the nurse ID of this, she has recently married and her new family name is G. Write a SQL statement to update her record. So पहले आपके पास table room आ जाएगा, update B nurse set. अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपको जो column होगा उसकी क्या value होगी, right? So यहाँ पे हमारे पास अगर tofu था, this is the row that we want to change. So tofu is in column number product column. The field name is column. Sorry, the field name is product name. So product name, where it is equal to tofu, so we do that. Set product name is equal to, इसको हम कर देंगे rice, where, और यहाँ पे अब आप condition लगा दोगे where the product name is equal to tofu, or where supplier ID is equal to let's say 6, or where price is equal to 23, जो भी एक unique condition होगी, right? Otherwise it will change multiple values at the same time. So again update, यहाँ table का नाम set, यहाँ पे आप field name बताओगे where, जहाँ पे आपकी कोई भी specific आपने condition के ऊपर उसको update करना है. Okay, we'll select from where start करते हैं, then we have the count average, and then we'll solve these questions. Now we'll use the actual SQL. Okay, so a basic syntax आप लोगों को याद होगा, select from where, right?
this name of the table is products. So from products, if I do star here, it means select all the fields. Okay, so this will just simply return the whole table. ये सारे टेबल आगे से return हो रहा है. In fact, I'll be putting them down in the graph file as well ताकि आप लोग बाद में इसको access कर सकें. So this will return you all fields. Okay, then you can specify the column. Let's say I want only the product name and the supplier ID. So if I run this now, not running it. Let me refresh. Oh, it's running now. ठीक है. So यहाँ से product name आ गया और सिर्फ supplier ID आ गया आपके पास. So यहाँ पे you can specify the name of the field as well. Then next we have is you can add a condition here. Okay, we'll only want so let's select all of them and let's apply some condition. Okay, let's say we only want the products that have price of more than 100. Okay, so select all the products where the price is more than 100. Okay, so if I run it now, so it will only return all the details of these two products because the price is more than 100. इस तरह से can add as many as condition as possible. Okay, let's say I only want the product name now, and I only want the price. If I run it again, so now we'll have a smaller table. Okay, so it's self-explanatory. Now I'll specify the range of price. So I'll say the price is between where price is, let's say, greater than 80 and price is less than or equal to 100. So ये आपका बिल्कुल जो pseudo code वाला syntax है वो आ गया वापस. ठीक है. So यहाँ पे सिर्फ 80 से 100 वाली जो prices है वो आपको मिल जाएंगी. Maybe let's make it 50 to 100 to get more values. And here you get more values out of here. Okay, so next you can try is यहाँ पे अब हम order by कर सकते हैं. So order by is another keyword that we have in SQL. So यहाँ पे let's order it by on the product name. So it's not ordered in any way अभी. So if I order by product name, so by default ascending order में इनको sort कर देंगे. देखो C, M, R, and S. Right? So this will order in ascending order. Then if you want descending order, so you will write DES. But if you run it, so you can clearly see that a keyword color change होना चाहिए था. So it should be DESC, and then this would be SRMC. So it's E2A format में आपका descending order में होगा. So if you don't write anything, it's automatically ascending. But if you want to specify, so you can write ASC. तो ये आपका ascending order में sort हो जाएगा. Right. So this is done. Then let me see. इसमें counts. Joins आ जाएंगे. Joins अभी नहीं हम कर रहे. Okay, so yeah, I think इसमें काफी है. इसके बाद let's do placeholders. So how about if the query is that only return the names that start with the C. So you can write where product name is like. So यहाँ पे अब जैसे C के साथ 4 characters हैं. So it starts with C but followed by 3 characters. So 1, 2, 3, 4. 4 characters. So you'll put 4 dashes. And if you run this, so it will only return you the values जहाँ पे आपके पास 4 characters हैं. That starts with C and literally has 4 characters after that. You were asking कि उसमें A included है या नहीं. So that means कि A could be anywhere, right? So उसके लिए हम लिखेंगे like percentage
a percentage. Again, percentage means any character. So it could be even a space, it could be 1 to 3, it could be tens of alphabets. So it means anything somewhere along it could be an A and then followed by any other thing. So if I run it now, it will literally just show all the names that have A somewhere in between, anywhere. Okay. So let's say if I look for some name that has Z somewhere, तो ये देखो ये आपके पास यहाँ पे gorgonzola और zansi और mozzarella ये सारे आ गए like this. Okay. So you guys tell me, in fact, how would I look up a name that ends with the Z? उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? So यहाँ पे हम लिख देंगे percentage C. Oh, sorry, Z, and this will be. Okay, there is nothing ending with C. So here we get one response. Okay, that's the idea. Okay, so I'm putting it here. It ends with the Z, and if you want something to start with anything, तो alphabet आपका start में आ जाएगा, and then so on, and then so forth. Okay, so that's the idea. Also, I would prefer अगर आप लोग dashes, मतलब नहीं, it's up to you. ये जो आप star वाली बात करते हैं, star basically use होता है Excel के अंदर. So Microsoft Excel के अंदर जब हम लिखते हैं SQL, तो वहाँ पे हम star use करते हैं, sorry, Access के अंदर. ठीक है, और SQL के अंदर if you want to do the same thing, so you replace it with a percentage sign. Similarly, Excel के अंदर Access के अंदर we put a question mark to replace one character, to represent one character, and in SQL we put a dash. So that's fine. Okay, so इसमें हमारी सारी I think अब SQL cover हो गई है. Okay, now let's move on to the aggregated functions: count, average, maximum, minimum, etc. This is interesting. Now we'll be able to aggregate it. So आपको अगर कहीं भी fill in the blank आती है ना, और उसमें उन्होंने इस तरह से लिखा होगा something like this: select, यहाँ पे एक blank होगी और brackets होंगे और brackets में blank होगा. So that would mean कि it would only be referring to an aggregate function. और aggregate functions क्या होते हैं? So aggregate functions are the ones that we use. So we have max, min, average, sum, and count. तो यहाँ पे आपके पास पहले aggregate function आ जाएगा और उसके आगे इसका name आ जाएगा field का. So an example, you want to count all the, let's say, names where let's say price is greater than 10. इस तरह करके इसको try करते हैं. So I'm going to count how many product names are there. Okay, let's just count this. ये जो n पे end हुए हैं, it should get me 3. I think it was product name. Yep, it returned me 3. ठीक है. अच्छा, आप past papers में आप देखो कि इसके आगे ना as का keyword use होता है. So as जो है ना, basically we use it to give a title to this column. So this column has no title. So आप इसको एक नाम दे दो. Let's say name count. Again, no spaces. So if you run now, it will be labeled. See, इस तरह से आप past papers में भी they use the same syntax. So as is used to give a name to the field. So यहाँ पे आप count कर लो, फिर you can sum the values as well. So I can sum maybe the prices of all the products that end with N. It says 79. Okay, price total maybe. It says 79.7. Okay, let's confirm it once. Let's only return the values. Select all the fields from products where product name is like N. और इनके prices देखते हैं क्या prices है. So they have 39, 31, that is 70, and then 79.5. Yep, our answer is correct. ठीक है, so इस तरह से sum और count हो जाएगा आपका. Then if you want to find the max, let's say price की बात करते हैं. So select the max of star उसके बाद where product name is like
Okay, so if I run this, it shouldn't run. ठीक है, so यहाँ पे आपको कोई कॉलम बताना है, ठीक है ना. काउंट के अंदर तो आपने काउंट करना है, so it's just going to return a number, but maximum actually needs value. So यहाँ पे you will pass in a column with actual numeric values, and then it should return us 39, and it does. ठीक है. Why is it returning 39? Because 39 was the highest price we had. We had 39, and then I think 31 is वहाँ से कुछ लिखा हुआ था. So if you change it to min now, so it will return you the minimum price. And it is giving you the minimum value. So यहाँ पे maximum value आ गई, और यहाँ पे आपके पास minimum value आ गई. And let's get the overall max value. Okay. So let's get the maximum price and without any of these conditions. So it's giving me 263. Okay, now let's return all the fields from products and see if the price is actually true. And in fact, let's order it by price. और descending order में कर लेते हैं, तो हमें automatically पता चल जाएगा. And 6.0 is the lowest price. Perfect. So we are doing it correctly. ठीक है. So is sum, min or max okay? And now we'll talk about average. So average के लिए we do the same thing. So for average we'll do select AVG, and again it should be applied on a column, और फिर यहाँ पे आपको output कर देगा. I'll remove this, run, and it is giving you an average. So let's output it as average with the column name. Perfect. ठीक है, ये like I'm covering everything extensively to make sure कि कोई भी चीज हमारी यहाँ पे it's not left. Let's talk about joins. So joins are very important, and joins का question जो है वो usually challenging जो है ना वो आता है आप लोगों को. Okay, so what is a join? इसके लिए we'll watch a quick YouTube video. Internet is still slow. Okay, so let's talk about the inner join. So देखो आप लोगों को Venn diagrams याद है, right? So you have the intersection, you have the union, etc. So inner join में essentially what we're doing is that we are finding the intersection of two tables. To understand it better, let's actually first look at the left and the right join. They are much easy. So आपके पास दो tables होते हैं, और आपने उन दोनों tables में से डेटा को extract करना है, ठीक है? So यहाँ पे we have the लेफ्ट जॉइन, ठीक है. अब लेफ्ट जॉइन के केस में क्या होगा कि जो आपका टेबल ऑन द लेफ्ट साइड है, द फर्स्ट टेबल है, यू विल बी गेटिंग ऑल द डेटा फ्रॉम हियर, बट यू विल ओनली एक्सट्रैक्ट द ओवरलैपिंग डेटा फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल. यहाँ पे द टेबल दैट यू हैव ऑन द लेफ्ट साइड, इसके साथ जो डेटा आपको रिटर्न होगा, बट जो राइट साइड पे टेबल है कस्टमर्स का, उसमें से सिर्फ जो कॉमन ओवरलैपिंग डेटा है बेस्ड ऑन एनी टू फील्ड्स वो आपका मैच होगा. सो लुक एट दिस, select all the data from the transactions table, left join it on customers on. अब आपने यहाँ पे कॉलम बताना कि किसके ऊपर आपने लेफ्ट ज्वाइन करना है. on transactions dot customer id, that means कि आपका जो ट्रांजैक्शन का टेबल है उसमें जो कस्टमर आईडी की फील्ड है, which is this that you see here, and then where it matches the customers की customer id. So customers के customers are the second table, and उसी customer id आपको right side से मिलेगी. So now if you look at the return output of this, यहाँ पे you have the transaction ID, sorry customer ID. So यहाँ पे देखो ये पूरा टेबल आपका रिटर्न हो गया, इसमें 3 records थे, 3, 2 और 3, but from the customers table only 2 records returned. यहाँ पे customer IDs पे इनकी मैच कर रही थी. So the third one had no other customer ID, so it did not return any value. Okay, so this is the idea. The step join here. So जो आपका the first table that you have here, it will be returning all the data, and the table on the right will यहाँ पे जो आपका म्यूचुअल डेटा होगा, overlapping data on both the fields that will be returned. So here we're doing it on the customer ID. So we're matching it on the both customer IDs from both the tables. So यहाँ पे जहाँ पे आपकी customer IDs match हो रही हैं, so वो वाला data return होगा alongside the whole table data from the transactions.
ओके देखिए, सो अगर हम राइट जॉइन को देखें, सो राइट जॉइन में क्या होगा कि आपके पास जो जो सेकंड टेबल है उसका सारा डेटा रिटर्न होगा alongside द कॉमन ओवरलैपिंग डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. सो अगर आपके पास जो राइट टेबल है इसमें अगर कस्टमर आईडी देखो 1 2 3 3 4 है, बट लेफ्ट टेबल में 1 2 3 4 की कोई आईडी नहीं है, सो ये वाला डेटा आपको रिटर्न नहीं होगा. ठीक है, इट विल रिटर्न यू ओनली दिस complete right table, but only the overlapping parts from the left table. ठीक है, नाउ लेट्स यूज दिस एज अ बेसिक. अब इनर जॉइन में अगर आप लोग देखो यहाँ पे सिर्फ जो म्यूचुअली कॉमन डेटा दोनों टेबल में दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न. ठीक है, सो ट्रांजैक्शंस का डॉट कस्टमर आईडी, सो कस्टमर आईडी में जो ट्रांजैक्शन है और जो कस्टमर के टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो जो मैच करेंगे. सो यहाँ पे अब आप देखो ओनली बोथ टेबल्स जहाँ पे ये फील्ड आपकी मैच करेंगी वैल्यूज, सिर्फ वो वाली वैल्यूज रिटर्न होंगी. बट अगर आप लोग कंप्लीट टेबल देखो इसका, सो यहाँ पे आप लोगों को एक जो ट्रांजैक्शन टेबल है यू कैन सी द कस्टमर आईडी विच इज नल. ठीक है, जिसकी ट्रांजैक्शन आईडी 1004 थी, एंड देन यू विल आल्सो सी अ कस्टमर आईडी विच इज पॉपी जिसकी कस्टमर आईडी 4 है. ठीक है, अब आप देखोगे कस्टमर आईडी 4 इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, सो पॉपी शुडंट बी आउटपुटेड. सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास नल कस्टमर आईडी है वो दूसरी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, सो ट्रांजैक्शन आईडी 1004 वाली जो रो ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए इन द इनर जॉइन. सो व्हेन वी रन द इनर जॉइन यू विल सी इट हैपनिंग. और जब ये देखो जब इसका आउटपुट आएगा तो 1004 वाली ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं है, और सेकेंडली जो कस्टमर आईडी जो नल थी वो भी नहीं है. क्यों? बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिटर्निंग द डेटा दैट इज प्रेजेंट in both the tables against both their customer IDs. This is what inner join is. It's just a way of connecting two tables together. Okay, so we are doing number 23. Okay, so the question says that you have to write the SQL statement to return the total number of courses that have started after 9th September. Okay, so in order to do that, अब आप पहले तो आपने टेबल के जो है वो आपने देखने की इसका डिजाइन किया और उस हिसाब से you have to see what will be the right course of action. Okay, so if we look at the design of the table, they have course information table, tutor table, and course schedule table. So to return the total number of courses that started after 9. अच्छा, total number of courses का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको count का function apply करना है, वो तो डायरेक्टली में नजर आ रहा है. और so let's see, that started after 9 September. So जहाँ पे date started, okay, we have the date started here. ठीक है, and then the total number of courses जो है हमने course ID से हम count कर सकते हैं, and dates are okay. So it's all in the same table. So यहाँ पे कोई join वगैरह की जरूरत नहीं. This is a simple question. So इसका हम इधर ही लिख लेते हैं. So this will be select count of course ID from the table name is course schedule where में अब आपने बताना है after 9 September, so you'll use the greater than sign. अब यहाँ पे they're saying after a certain date, so after we will use the greater than sign. So we'll write where the date started is greater than 09/9 September would be 9 month, I believe. Yes, October, September, and then 2023. This would be the answer. तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने सीक्वल वाली क्लास में कहा था कि the columns are not named अगर आप aggregate function यूज करो. So it's always nice कि अगर आप as वाला कीवर्ड यूज करके तो you rename the column. Let's call it courses count. इस तरह कुछ भी आप नेम दे सकते हैं. Then that would be the answer. ठीक है, so इसकी मार्केट सीम के साथ ओपन कर लेते हैं. Well, this would be correct. इसको मुझे चेक करने की जरूरत नहीं. Okay, ये theory है. This is say okay. So normalization वाले question के हम साथ साथ try करते रहते हैं. Now the next question is, so we have this from November 23, paper 1-2, part C, which says explain how to modify the table to put it into first normal form. Okay, अब 1NF के ना कुछ rules होते हैं. Okay, so normalization की आपको ना सबसे पहले rules पता होने चाहिए कि what are the rules, so you can actually apply those on the questions.
So सबसे पहले normalization में ये होता है कि no repeated groups of attributes and all the attributes should be atomic. That means कि indivisible values, which simply means कि आपके पास अगर कोई भी field है जहाँ पे first और last name एक साथ है, like let's say um, Ali Hamza is one name, Salman Asim is one name, ठीक. So इसमें अगर आपके पास first और last names जो है वो भी एक column में, so that means कि ये atomic नहीं है, so you need to split them into two columns जहाँ पे first name separate out हो जाएगा और जो last name है वो भी आपका separate out हो जाएगा, like this. And then no duplicate rows. So data cannot be duplicated because आप यहाँ पे primary key introduce कर दोगे. So keeping these rules in mind, अब हम इनको try करते हैं. So explain how to modify the table to put it into one NF. Okay, अब आप one NF के लिए अगर आप यहाँ पे देखो, so इनके जो names हैं, okay, names look fine so far, but they could be split into first name and last name, like I discussed. Okay, then the next thing we have is date of birth is fine, tutor group is fine, or okay, subject. So देखो इसमें multiple values. एक तो multiple values है और secondly ये values repeat भी हो रही है. So a lot of students will have the same subjects, and since they'll have same subjects, so they'll also have the same subject codes. So हमें ये वाले जो rules हैं इनको identify करना है, ठीक है. So how do we modify it? अब इसकी modification के लिए we will be writing some steps. So first of all, we'll say that we have to identify the repeating attributes, repeating set of attributes, और हमारे केस में हमने identify किया है, in our case they are subject and subject code. So what we'll do next is that we have to split the values, so each field becomes atomic, like these rules that we studied कि आपके जो attributes हैं वो atomic होने चाहिए, so they should be indivisible. And in order to do that, we also need to identify a primary key for this, for the table. So ये आप देखो यहाँ पे कोई primary key भी नहीं है, right? Because अभी first normal form में आएगा. And then values को atomic करने के लिए, so split the student name field into two fields of first and last. इस तरह से या first and last के लिए. This would be the correct answer. So इसमें हमने क्या किया, पहले हमने रूल बताया कि आपने आइडेंटिफाई करना है, देन हमने उसकी एग्जांपल दी है, फिर हमने रूल बताया, and then उसके हमने एग्जांपल दी. So this is how you're supposed to answer such a question. So let's check the marking scheme for this, or should be the same. Okay, so identify repeating. If repeating is bold, that means the idea must be present. Groups of attribute, subject and subject code. Each field must be atomic, so student name should be split into first and last name, and then the primary key should be identified. और इसमें आप बता भी सकते हो कि primary key introduce a new field. That could be an auto number जो हर दफा incremental by one, but these values will not be. None of these fields qualify for a primary key. Okay. Okay. Then we have these definitions. Okay, going up. All right. So now we have SQL to define the database called shop. Okay. So ये आप लोग मुझे बता दो, how do we create a database called shop? उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? What do I write to create this database? Create and semicolon. Then write the script to return the total quantity of items that the customer with the ID of HJ231 has entered. Okay, I think यहाँ पे most likely हमने join use करना होगा. Total quantity of items with the customer ID. Okay, let's see. So we have customer ID here, and we have customer ID here. Okay, so हमारे पास ये दो tables हैं. Okay, then we need to find the quantity of items. So quantity of items, we have order item, shop, order, supplier. Okay, we have the quantity here. So now we have two separate tables. So yes, यहाँ पे अभी net value लगेगा. ठीक है. अब हमारे यहाँ पे जो order number, item or shop order. Yes. So we need to actually link these two tables. यहाँ पे जो order number है वो इस order number के साथ match होगा
और ऑर्डर नंबर के ऊपर अब हमारी इनर ज्वाइन होगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी विल रिटर्न द क्वांटिटी ऑफ सम कस्टमर आईडी। ठीक है, अब इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। राइट द कोड समवेयर हियर। ओके, सो इन ऑर्डर टू राइट दिस कोड डाउन, अब सबसे पहले तो आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट, एंड देन देयर सेइंग कि आपने इन सब क्वांटिटीज को टोटल करना है। सो सेलेक्ट सम करना है आपने क्वांटिटी को, एज में भी कर लेते हैं टोटल क्वांटिटी। ओके, फ्रॉम, अब आपने दो टेबल सेलेक्ट करने हैं, शॉप ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम। सो विल सेलेक्ट शॉप ऑर्डर कॉमा ऑर्डर आइटम, और आइटम और शॉप ऑर्डर, यस। सो व्हाट नेक्स्ट, आप लोग आइडिया दे सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे हम इनर जॉइन वाला ही यूज कर लेते हैं, फ्रॉम ऑर्डर आइटम, और यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम ऑर्डर आइटम इनर जॉइन ऑन शॉप order. I'm just going to make this lowercase so it's more readable. Okay, so select quantity. So from order item, और हमने order item से यहाँ से quantity select किया और इसको हमने inner join कर दिया on shop order. So you write where order item dot order number is equal to shop order dot order number. अच्छा, ये एक कंडीशन हो गई. What will be the second condition now? अब वो सेकंड कंडीशन है कि जहाँ पे कस्टमर आईडी HJ231 होगी, ठीक है, और कस्टमर आईडी इज इन द शॉप ऑर्डर टेबल, सो हमने वो लिख देना एंड शॉप ऑर्डर की जो कस्टमर आईडी है दैट इज इक्वल टू HJ231 सेमीकोलन, दैट इज द कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब एक दफा इसको रिव्यू करते हैं। सो व्हाट डिड वी डू, वी हैड टू टेबल्स, एक टेबल में ऑर्डर नंबर थे और कस्टमर आईडी थी, और दूसरे टेबल में ऑर्डर नंबर था और उसके साथ क्वांटिटी थी। सो दिस ऑर्डर नंबर वाज द कॉम्पोजिट की है, ये यहाँ पे प्राइमरी की है। नाउ वी हैड टू लिंक दीस बोथ टेबल्स टुगेदर। सो इसलिए अब हमें इनर जॉइन यहाँ पे यूज करना है। इनर जॉइन यूज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, पहले तो हमने जो भी क्वांटिटी है इन सब क्वांटिटीज को आपस में सम करना है। सो वी सम द क्वांटिटी and then it's part of the order item table, so we write it first, then we inner join it on the shop order. So shop order पे हम inner join करेंगे because यहाँ पे आपकी कस्टमर आई, यहाँ पे भी ऑर्डर नंबर आपको एग्जिस्ट करता है, और इस टेबल से आपको कस्टमर आईडी मिलेगी। और इस टेबल से कस्टमर आईडी आपको कैसे मिलेगी, जब आपको दोनों ऑर्डर नंबर जहाँ पे मैच कर रहे होंगे वो वाली कस्टमर आईडी चाहिए। एंड देन वी डू द कंडीशन ऑन बोथ ऑर्डर नंबर्स। सो ये एक कंडीशन हो गई। इनफैक्ट आई मिस वन थिंग, यहाँ पे एंड आना चाहिए, अगर लिखा हुआ एंड, ओके, एंड सो एक कंडीशन आपके पास यहाँ आ गई। If this condition is met, then you check the second condition, which is that the customer ID from the shop order should be the one that we are given in the question, which is H231. So ये हमने यहाँ पे इसको ये check कर लिया. This is how you are supposed to do. ठीक है, अभी और questions करेंगे, so would make more sense. साथ साथ चेक कर लेते हैं। So इसमें अच्छा दो मेथड्स होते हैं, एक आप इनर जॉइन के साथ भी कर सकते हो, एक बगैर भी कर सकते हो। So let's do the inner join method because that is much more convenient. So you select the sum from the table and then you inner join it on the other table. Then you have the field being compared with the other one where they both match, and that's the answer. Okay, I think from order item. Okay, हाँ मैंने on के साथ लिख दी इसको. So this on should be after. So on, और यहाँ पे where आएगा. Now it should be fine. Okay, अब ठीक है, वो दूसरे वाला सिंटेक्स भी साथ आ गया. So select from inner join this on this table
यहाँ पे आपकी इनिट की कंडीशन आ गई और यहाँ पे आपकी वो कंडीशन आ गई जिसमें हमें डिटेक्ट स्टार्ट करना है। सो अभी लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। Okay, this is from June 23, paper 1-3. We have a car rental database that is not normalized. The current database design is this: booking hai or customer hai. And then they're saying, write a normalized database design for this database. All tables must be in 3NF. Use the field names and the underline the primary key fields. Okay, so here हमें खुद से करना है, इसमें we are not given any starting sample data as well. Okay, so ये इस सारे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं. सो 1NF की डेफिनेशन आपको याद होती है 2NF की. सो 2NF की डेफिनेशन ये होती है कि पहले 1NF हो और फिर नो पार्शियल डिपेंडेंसी, व्हिच मींस कि एवरी नाउन की एट्रीब्यूट शुड डिपेंड ऑन द प्राइमरी. ठीक है. सो व्हेन एन एट्रीब्यूट डिपेंड ओनली ऑन पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की, तब पार्शियल डिपेंडेंसी होती है. कंपोजिट की होती है कि जो आपके पास मल्टीपल फील्ड्स बन के आपकी कोई प्राइमरी की बना दें. अब अगर आप यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे you have product ID, you have product name, you have supplier and you have order ID. You can clearly see कि जो आपका product name और product ID है, ये दोनों आपस में dependent है एक दूसरे पे, right? And जो supplier है, that is dependent on the order ID as well, कि आपने कहाँ से order किया है. So इस वजह से ये जो है ये आपका 2NF form में नहीं है. So product name and supplier depend on the product ID, ठीक है, and not on the primary key, which is order ID and product ID. So this is partial dependency. So solution ये होगा, you split the table and you move the products into another table. So आप supplier को अलग कर दोगे, so यहाँ पे product आपने अलग कर दिया और उसके बाद जो supplier से उसको आपने अलग कर दिया. So हर order ID के against product ID आ गई और product details आपने separate out कर दी. Then 3NF में it should be in 1 and 2. Then no non-key dependency and no transitive dependency, which means an attribute should depend only on the primary key, not on any other key attribute. तो इसके एग्जांपल में अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे you have the teachers, यहाँ पे उनकी एज है, you have the subjects, and then you have the student ID. Now the problem is that the teacher it depends on the teacher, which in turn depends on the student ID. So that means that इनकी आपस में transitive dependency है. So when one attribute is dependent on one, and then it is also dependent on another one. So बाप ने क्या करना है, बाप ने again इसको split कर देना table को, so you'll get something like this. Subjects अलग हो जाएंगे, teachers separate out हो जाएंगे, और उसके बाद जो teachers की ages है वो भी separate out हो जाएंगी. So their information and then their relevant details. Okay, so ये थोड़ा सा abstract concept है, इसलिए the more you practice it, the more it will make sense. Okay, so we have booking, customer. So ये दोनों tables हैं, अब इनको हमने third normal form में लाना है. Okay, what can we do here? So अब हम अगर booking में देखें, so booking में क्या क्या है, यहाँ पे आपके पास car registration है, start date, end date, car model, color, customer first name. अब यहाँ पे अगर आप एट्रीब्यूट देखो तो आपको दो नजर आ रहे हैं, आपको कस्टमर्स के एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं और आपके कार के एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, राइट. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम आए तो आपको कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नजर आ रहा है. सो दिस इज फाइन, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स है बट इट हैज नो प्राइमरी की. सो पहले हम कस्टमर्स के टेबल को जो है वो ट्राई करते हैं कि हम इसको नॉर्मलाइज करें. तो इफ वी डू कस्टमर, तो इसकी जो कस्टमर आईडी होगी वो प्राइमरी की बन जाएगी. दैट वुड बी अ न्यू field that will create. I'm putting start that is telling that is the primary key. मैं underline ये भी यहाँ पे कर सकता. Okay, then बाकी चीजें सब सेम रहेंगी because they are all relevant and इनके आपस में कोई dependency नहीं है. First name, last name, then email address and then telephone number. Yes, so they're all dependent on the customer ID and none of them are dependent on each other directly. ठीक है, सो कस्टमर हमारा क्लियरली इस तरह से वो हो गया, नॉर्मलाइज हो गया. अब बुकिंग वाला जो टेबल है इसमें आपको लाइक आई टॉक्ड अबाउट कि इसमें कस्टमर्स और कार्ड्स दोनों की डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पे हुई है. सो मे बी कस्टमर्स हमारे पास ऑलरेडी है, सो हम बुकिंग के टेबल में से हम कार को सेपरेट आउट कर देते हैं. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अ टेबल कॉल्ड कार्स. अब कार्स के लिए यहाँ पे कार मॉडल है, कार कलर है और कार और क्या, हाँ बस यही है, और कार रजिस्ट्रेशन है. सो कार रजिस्ट्रेशन आईडी वुड बी द प्राइमरी की है, राइट. कार रजिस्ट्रेशन जो भी नंबर होता है एक.
So we can make it the primary key, so it would become car registration. ये हमारी primary key बन जाएगी, and then the remaining details are car model and car color. ठीक है? And again, now all of these attributes are dependent on the primary key of the car registration. आप car registration की value change करोगे, तो car model भी change हो जाएगा और car color भी change हो जाएगा. Right? And then we just are left with the booking table. So booking table में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? Booking table में now we need to create a primary key for the booking, which we can call to be the booking ID. You can call it anything else. And then बाकी booking details में क्या क्या है आपके पास इसमें? अच्छा, अब now you have to join these two tables. अब customer और car जो tables है ये isolated है, right? अब booking में आपने इन tables को जो है वो basically आपने connect करना है. And you have to connect them in such a way कि इसके अंदर कोई भी dependencies ना हो between the field. They must all be dependent on the primary key. So booking ID के अंदर आकर start date है और end date है, ये तो as it is आ जाएंगे. So they directly dependent on the start on the booking ID. Then we have the इसके अलावा we are left with okay. सो बुकिंग में बुकिंग आईडी आ गई, स्टार्ट डेट आ गई, एंड डेट आ गई. अब जो आपकी कार की जो रजिस्ट्रेशन है जो आपने बुक की है, सो दैट विल गेट फ्रॉम द कार टेबल, दैट इज द कार रजिस्ट्रेशन. एंड देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग किस कस्टमर ने कार परचेज की है वो हमें मिल जाएगा कस्टमर आईडी फ्रॉम द कस्टमर टेबल. एंड विद दिस अब आपके पास ये सारे जो टेबल्स हैं दे डू नॉट हैव एनी रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स, दे आर ऑल एटॉमिक, they do not have any partial dependencies or transitive dependencies. So again, if I change the booking ID, so all of the fields will change. And similarly, if none of these fields are dependent on each other, right? So ऐसे नहीं होगा कि अगर मैं car registration number change करूँ तो उससे customer ID change हो जाए. So start date, end date, booking ID, car की अपनी details आ गई और customer की अपनी details आ गई. So I believe this should be the right answer. This is June 23, paper 1-3. It's the number 4. इसकी मैं exam report भी खोलता हूँ, just if we can get some insights into it. June 23, paper 1-3 exam report. Question 4. Part C. Okay. There were a small number of correct answers to this question. Okay, very interesting. Many candidates who give the correct tables gave an incorrect primary key for the booking table because the start date was not included. Better answers included the booking ID in the booking table. Some did not remove the car attributes from the booking table into a separate table and instead implemented a customer booking table, which led to confusion. Okay, so यहाँ आप लोग देख सकते हो प्रिंटिंग के it was only 800 question. So इसके working scheme में अगर हम देखें, okay, only 3 tables, appropriate primary key. Booking table includes primary key from car and primary key from customer as foreign keys. All original fields are in the correct tables. Okay, so I believe हमारा बिल्कुल ठीक है. So we have the booking ID, car registration, customer ID, start and end date, car registration, model and color, customer ID and customer details. Yes, perfect. Okay, then we have, there are 4 errors in the script. Okay, let's try this. चलो ये आप लोग मुझे बताओ. This is to see paper 1-2, question C, part 2 and part 3. The SQL script should return the number of rides that have the rider level beginner and a lesson book on this date. It must have the speech mark because it's a string. और जो last है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे और का symbol use हुआ है. Again, this is not supposed to be on. Where student IDs are from the board tables and the date is this and this is this. इसके जो correct answer होगा that will be right select count और ये बाकी वाला पूरा कोड ठीक है, from ये वाला कोड भी ठीक है, where. So student IDs should be from both the tables. So अब यहाँ पे कौन से tables है? There is a student and there is a lesson and there is a horse. Okay, so this should be where student dot student ID is equal to lesson dot student ID and date is equal to ये सारा ठीक है and यहाँ पे we can write this आपने quotation marks.
So this is also done.